तमिलनाडु का ये ओरिकोट्टाई है। मदुराई से लगभग 150 किलोमीटर दूर। समुद्र किनारे की आहट और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये स्थान आज 2500 साल बाद पुनः उसी समृद्ध परंपरा की कड़ी बनने जा रहा है जिसे समूची दुनिया बौद्ध संस्कृति के नाम से पहचानती है। दक्षिणी भारत का ये समुद्री किनारा बुद्ध धम्म के विकास के कई उतार चढ़ाव देख चुका है, लेकिन आधुनिक समय में बाबा साहेब की धम्म क्रांति ने बौद्ध संस्कृति का जो पुनरुज्जीवन किया है, ये प्रतिबिंब उसी का है। दरअसल ये बुद्ध विहार की नींव रखी जा रही है और ये ढोल की आवाज जो सुनाई दे रही है वह बुद्ध विहार भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारे अतिथियों के स्वागत के लिए है। वैसे बुद्ध धम्म की विशेषता भी है कि बुद्ध धम्म जहां भी जिस किसी क्षेत्र में प्रवेश करता है उसी परिवेश के रंग में रंग जाता है और उस परिवेश को शील, प्रज्ञा, करुणा, समाधि, मैत्री के रंग में ढाल देता है। ओरिकोट्टाई में बुद्ध विहार की नींव रखी जाना यह वास्तव में एक ऐतिहासिक घटना है। यह घटना घटित हो रही है 14 अक्टूबर 1956 की ऐतिहासिक धम्म क्रांति के 64 साल बाद। तमिलनाडु के इस दूर दराज गांव में भंते मौर्य बुद्ध ने पहल की और बौद्ध परंपरा के अनुसार भिक्षु संघ ने विधिवत भूमि पूजन कर बुद्ध विहार के निर्माण का संकल्प लिया। Today we celebrated and we started first foundation stone program. The foundation stone program is led by me and the member of parliament Dr. Tol Tirumavalavan came and installed the inscription board, and many leaders and Buddhist scholars participated in that program, and the local MLA Mr. Kadar Baksha Indra Muthramalingam, the chairman of Tiruvadanai Muhammad Mukhtar, the president of Orikottai Mrs. Kandimadi Mahalingam, and councillor Srinivasan, and so many delegates participated, and they happy to work and practice Buddhism in Tamil Nadu. This is the first Tamil Buddha Vihara in Tamil Nadu, is run by Bragbodhi Buddha Vihar. The Bragbodhi Buddha Vihar run by Bragbodhi Trust. The trust is going to build 3 crore rupiah Vihar in the place which the land is given by my father. The land is given to the Sangha, so it will be very big vihara in our place in the South Tamil Nadu. So I would like to invite all of you and propose you to support Pragbodhi Buddha Vihar and be part of the Pragbodhi Trust to revival of Buddhism in Tamil Nadu. I thank to Dr. Tol Tirumavalavan, member of parliament, and MLA Kadar Baksha as Muthramalingam, and chairman, and whoever participated in that great event. क्षेत्र के गणमान्य सुधीजनों ने इस समय अपना मनोगत व्यक्त किया। November 20th, we have laid foundation stone for a Buddha Vihar in Orikote village, Sivaganga district.
which organized by our Venerable Bhikkhu Maurya Buddha. I also invited by him and participated in that function. It's a great historical event. Definitely, we VCK party will support him to build that Buddha Vihar, and we'll organize like-minded people also in Tamil Nadu. महाराष्ट्र और कर्नाटक से भी भिक्षुगण इस समारोह में उपस्थित हुए। और यहाँ प्रज्ञाबोधि बुद्ध विहार भंते मदुरई मौर्य भंते जी ने विहार का तैयार कर रहा है। यहाँ का एमपी लोग भी आए, बहुत उपासक लोग भी आए, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन यहाँ धम्म का काम करने का बहुत ज़रूरी है और भंते लोग को ज़रूरी है। यहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। यहाँ का तमिल का भंते जी रहेगा तो धम्म का काम बढ़ते जाएगा। हमको यकीन है हमारे को यहाँ का धम्म का काम हमारे भंते मौर्य भंते जी करने वाले हैं और उसके साथ हम रहने वाले हैं और उसको हम उसकी मदद करने वाले हैं। और हम यहाँ ये कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करके बहुत आनंदित हो गए। क्यों बोले तो 500 से ज़्यादा लोग धम्म का कार्यक्रम पर आ गए हैं। आज भूमि पूजा हो गए। 1 साल का अंदर अच्छा सुंदर बुद्ध विहार बनाएगा तो वो अच्छे दिन आने के इंतजार में मैं बुद्ध धम्म संघ को नमन करते परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं। मेरा जो ये आज का दिन बहुत खुश का दिन है बोल के बोलने के लिए चाहता हूँ। तमिलनाडु स्टेट में जो मदुरई है, मदुरई से 120 किलोमीटर एक प्लेस में जो भंते मौर्य बुद्धा जी है, उन्होंने एक बेहतरीन विहार निर्माण का संकल्प किया है। तमिलनाडु यह प्राचीन काल से बुद्ध की भूमि रही है और उसके एविडेंसेस भी यहाँ पे काफ़ी जगह पे मिले हुए हैं। और यहाँ पे बुद्धिज़्म जो है काफ़ी मात्रा में पहले था और अभी धीरे धीरे बुद्धिज़्म यहाँ पे भिक्षुओं के माध्यम से बढ़ रहा है। और मौर्य बुद्धा जी जो है वो तमिलनाडु के काफ़ी पुराने और अच्छे भिक्षुओं में से एक है, जिनके संकल्प से यहाँ पे विहार बन रहा है। एक्चुअली विहार बनना और बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करना ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, आई बिलीव इन माई पीपल, दे विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर एस्टेब्लिशमेंट बुद्धिज़्म इन इंडिया। तो उसी उपलक्ष्य में जितने भी ग्रह त्यागी भिक्षु है या जितने भी उपासक उपासिकाएं हैं, ये सबके प्रयास से ही ये सपना, ये जो बाबा साहब का संकल्प था, ये साकार हो सकता है। और बाबा साहब का जो सपना है, उस सपने को इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस विहार के माध्यम से साकार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बुद्ध विहार निर्माण के संकल्प पर अपना मनोगत व्यक्त करते क्षेत्र के गणमान्य जन। An organization called Mass Movement for Transformation, which is initially formed by a group of doctors, around 300 doctors in Tamil Nadu, mainly for propagating Baba Sahib Dr. Ambedkar's ideology, and also to look at the social aspects of caste, which is the most important thing in India. So we consider the most important disease in the society is the caste-based discrimination. So as doctors, we thought that we must also look at this social disease rather than the physical disease of ailments alone. So after that, this movement of our doctors, it expanded all over Tamil Nadu to all the other professions also. Right now, we have around 10,000 members of this mass movement for transformation belonging to the various different fields. We have lecturers, teachers, lawyers, businessmen, professors, like that. We have got a huge group. All follow Baba Sahib Dr. Ambedkar's ideology. And to our pleasure, this movement has now gone to national level, and all over the country, we have around 1,000 doctors, all Ambedkarite doctors, and we have organized in the name of International Ambedkarite Doctors Federation, IADF. So the main purpose of this is to propagate Baba Sahib's ideology. And what we have concluded based on our multiple discussions and seminars, that Buddhism is the solution to bring about peace and harmony in the country. Because to annihilate caste or be it to the salvation of the oppressed people, Buddhism has a way. So we have started propagating Buddhism, the real principles of Buddhism, and why Baba Sahib chose Buddhism for the upliftment of the downtrodden people in our country. So this has reached a lot of people, and many people have embraced Buddhism now.
And every month on Paurnami days, there are series of embracing Buddhism programs. And this December 6th also, we have a huge program where people are going to embrace Buddhism. So people have started realizing why Baba Sahib proposed Buddhism and the real principles of Buddhism, and how Buddhism can eradicate caste in India and bring about peace and harmony, equality. The real preamble of our constitution, the liberty, equality and fraternity, can be really achieved by propagating Buddhism principle. And that is what our association is doing. And we would be interested in cooperating and coordinating with all the like-minded organizations all over the world. Jai Bhim Namo Buddhaya. I'm Dr. Kariyasamy Sakya. I'm an anesthesiologist working in Trichy Government Hospital. My wife is a doctor, gynecologist. We have our own hospital, 30-bedded hospital, multi-specialty hospital. And in our hospital, we have very big Buddha statue in all the floor. And every patient, when they come to my hospital, they'll witness Buddhism, Buddha. And they are very happy. And in addition to that, after realizing the truth, we embraced Buddhism in the year of 2016 along with the Dr. Rajwardhan and the other doctors. And we spread this message to all the people, public, rural areas. One thing is very important is a doctor usually will not talk about the society or a general problem. When we say in Tamil Nadu, we doctors are trying to say something means the people are very much receptive and they are giving good attention to our talk. Why doctors are coming and talking like this? So there is something. So in that way, our talk and our message has reached the public very much. And now the enlightenment is happening everywhere. And the people and the parties, political parties also taking up the Buddhism in their hands. So after embracing Buddhism in my place, in Trichy, we assemble every Paurnami and we gather and we conducted Children Buddhist Conference once, and we are going to conduct coming December 26th in the name of Chibukan, Children Buddhist Conference. And we have continuous activity, family meet, and we are spreading the Buddhist principle and cultural activities to the public, and also we gather ourselves in a very good manner, and it is going up. I am Dr. Aruldas, pediatrician from Sivaganga district. My wife also doctor. We are planning to embrace Buddhism on December 6th. Not only embrace the Buddhism, we return to original mother religion and ancient religion also. Actually, whichever, whenever the truth is masked, nowadays that is the only truth. So we will enlighten the original history, so that we are all back to our original religion. So we are planning to more and more number of our own relatives and friends to embrace Buddhism. Basically, I am a Buddhist scholar because my PhD and PDF work on Buddhism, impact of Panchashila, Ashtanga Marga on personality and mental health. My postdoctorate from UGC, they have selected me the impact of Vipassana meditation on world peace. So which is today I will going to say Charata Bhikkava Charikam Bahujana Hitaya Bahujana Sukhaya Lokanu Kampaya Adi Kalyana Madhya Kalyana Anta Kalyana. This was the message by Gautama the Buddha. So he is a great psychologist. He talk about the mind and body relationship. Actually, I am very proud and grateful moment for me to invited the land of revolutionists in India, which is very unique. Adora Das is one of the great Buddhist scholar in South India. I really, because in one word I want to say that Buddha is in a purely science, which is going to be wherever you have to test. 2 into 2 is 4. The same manner, Buddha taught is Buddha ideology, Buddha preaching and principles is a science. A person is going to be a peace, tranquility to create their self and to create the society, to create a world. The Buddha teaching is a very relevant.
I am very grateful for Aaj Tak Awaz India because it is doing a lot of real history of the India to creating Prabuddha Bharata. I am thankful on behalf of India and particularly for Buddhist community. Jai Bhim, Jai Bharat, Namo Buddhaya. बाबा साहिब की धम्म क्रांति का ये चौतरफा प्रभाव है जो इस तरह पल्लवित हो रहा है।